76 years is a long time to harbor a grudge. There are parallels across the globe, for example, PRC over Taiwan, Argentina over the Falkland Islands, the Palestinians over Israel. Between India and Pakistan, the wound left open by the British has continued to fester since 1947, despite ministrations by well-meaning politicians, diplomats, and peaceniks. War has proved no panacea, peace elusive. The dove of peace, exhausted, mission unaccomplished, is dying of old age. At no time have these two states come nearer peace than during the stewardship of the late Satinder K. Lamba, India's representative to Islamabad as Deputy High Commissioner, 1978-81, as High Commissioner, 1992-95, and more significantly as the Special Envoy of PM Manmohan Singh, 2005-14. He died in June 2022. His posthumous memoirs In Pursuit of Peace, India-Pakistan Relations under 6 Prime Ministers, 2023, will never be disseminated in Pakistan, unless circumstances change. That is more than a pity, it is a tragedy. 3 generations of Indians and Pakistanis who have known wars need to know how dangerously close they came to peace. War has proved no panacea. Many Indian diplomats have written on Indo-Pak relations, amongst them Kuldip Nayar's Distant Neighbors, Mani Shankar Iyer's Pakistan Papers, and J.N. Dixit's India-Pakistan in War and Peace. None can match Sri Lambia's credentials. Like 19th-century French diplomat Charles Talleyrand, who served his country during the French Revolution, under Napoleon, the Bourbons and finally Orleans royalty, Lamba served under 6 successive Indian PMs. His access to them varied, but he enjoyed their confidence without betraying their trust. Lamba defines Indo-Pak relations as not a diplomatic choice, but a political one. Given the deep weight of public opinion and sentiment attached to India-Pakistan relations in both countries, there appears to be little option but for the two countries to work towards calculated and intuitive decisions. He devoted the latter part of his career towards this end. His book is a muster of detailed notes he kept, sharply etched biographical sketches of prominent Pakistanis both in khaki and mufti, and informed insights into the attitudes of the Indian leadership towards Pakistan. He recalls the conciliatory remarks made by Narasimha Rao as External Affairs Minister to Pakistani businessmen at Karachi in 1981. It is not unusual to find next-door neighbors not being on talking terms for a while, but neighborliness prevails in the end. And Rao's later taunt to Pakistan on August 15, 1994, made prescient by PM Modi's subsequent action revoking Article 370 with you, without you, despite you, Kashmir will remain an integral part of India. A piquant recollection amongst numerous others in the book is about the meeting in 1988 between PM Benazir Bhutto and PM Rajiv Gandhi's envoy Ronan Sen. At the outset, she signaled that the meeting room was likely to be bugged and that sensitive issues would be communicated by handwritten exchanges on a notepad passed back and forth while discussions for the record could continue simultaneously. Lamba lauds the courageous efforts made by PM Atal Bihari Vajpayee during his bus yatra to Lahore in 1999, the summit at Agra in 2001, his visit to Islamabad in 2004, and his conviction recorded at the Minarai Pakistan that a stable and prosperous Pakistan is in India's favor. The strength of Sri Lambia's book is his account of the back-channel efforts he made as PM Singh's envoy with Pakistani counterparts, particularly Tariq Aziz, Gen Musharraf's confidant. They spread over 9 years, 2005 to 2014. During this period, Lamba calculated that he met Singh for guidance 68 times and his Pakistani interlocutors for resolution 27 times. Gradually, they inched across the no-man's land between Musharraf's 4-point plan and Manmohan Singh's suggestion of economic integration through soft borders. An agreement appeared within grasp, and then like a mirage, it vanished. Indo-Pak peace has proved elusive because the leadership on both sides are ringed, like cormorants. They carry a constriction that inhibits ingesting a solution, political on India's side and military on ours. An unspoken question, however, remains. While history knows what happened to the politicians who should have taken decisions and couldn't,
where today are those unseen forces which prevented them from doing so. Sri Lambaugh concludes with this regret: the prospects for dialogue, engagement and a broader peace process have never seemed so distant, because we see each other principally through the prism of religion. Churchill's advice to the US and the Soviet Union during the Cold War could guide the leadership of our countries, bridge the gulf between the two worlds, so that each can live their life, if not in friendship at least without hatred. The writer is an author. Published in Dawn, April 6, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. 76 साल बुग़्ज़ रखने के लिए एक तवील वक्त है। दुनिया भर में मुमासलत है, मिसाल के तौर पर ताइवान पर PRC, जज़ायर फ़ाकलैंड के ऊपर अर्जेंटीना, इसराइल पर फ़लस्तीनियों का ग़लबा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अंग्रेज़ों की तरफ से खुला हुआ ज़ख्म 1947 के बाद से जारी है, बावजूद इसके कि अच्छे सियासतदानों, सिफारतकारों और अमन पसंदों की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बावजूद जंग में कोई इलाज साबित नहीं किया है। अमन नामुमकिन है। अमन का कबूतर थका हुआ, मिशन पूरा नहीं हुआ, बुढ़ापे से मर रहा है। ये दोनों रियासतें 1978-81 में डिप्टी हाई कमिश्नर, 1978-81 हाई कमिश्नर, 1992-95 और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 2005-14 के खुसूसी एलची के तौर पर इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के नुमाइंदे आजहानी सिकंदर के लांबा की क़यादत में किसी भी वक्त अमन के करीब नहीं आई है। जून 2022 में उनका इंतकाल हो गया। उनकी बाद अज़मर्ग याददाश्तें अमन की तलाश में 6 वज़राए आज़म के तहत पाक भारत ताल्लुकात 2023 पाकिस्तान में कभी भी नशर नहीं की जाएंगी, जब तक के हालात तब्दील न हों। ये अफसोस से ज़्यादा है, ये एक अलमिया है। हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों की 3 नस्लें जो जंगों को जानती हैं, उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि वो किस खतरनाक हद तक अमन के करीब पहुंचे। जंग का कोई इलाज साबित नहीं हुआ। बहुत से हिंदुस्तानी सिफारतकारों ने पाक भारत ताल्लुकात पर लिखा है, जिनमें कुलदीप नैयर के दूर दराज पड़ोसी, मनीशंकर अलिफार के पाकिस्तान पेपर्स और JN दीक्षित की जंग और अमन में हिंदुस्तान पाकिस्तान शामिल है। कोई भी श्री लंबा की साख का मुकाबला नहीं कर सकता। 19वीं सदी के फ्रांसीसी सिफारतकार चार्ल्स टेलीरेंट की तरह, जिन्होंने फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान नपोलियन, बूरबोन्स और आखिरकार ऑरलेन शाही खानदान के तहत अपने मुल्क की खिदमत की थी, लांबा ने लगातार 6 हिंदुस्तानी वज़राए आज़म के मातहत खिदमात अंजाम दी। इन तक उनकी रसाई मुख्तलिफ थी, लेकिन वो उनके एतमाद को धोखा दिए बगैर उनके एतमाद से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। लांबा ने पाक भारत ताल्लुकात की तारीफ करते हुए कहा कि यह सफारती इंतखाब नहीं बल्कि एक सियासी इंतखाब है। दोनों ममालिक में राय आम्मा और पाक भारत ताल्लुकात से जुड़े जज्बात को देखते हुए ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक के पास सोच समझकर और बदेही फैसले करने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। उन्होंने अपने करियर के आखिरी हिस्से को इस मकसद के लिए वक्फ किया। उनकी किताब में उनके पास रखे गए तफसीली नोट, खाकी और मुफ्ती दोनों ज़बानों में मुमताज़ पाकिस्तानियों के सवानही खाके और पाकिस्तान के बारे में भारतीय क़यादत के रवैयों के बारे में बाखबर बसीरत शामिल है। वो 1981 में कराची में पाकिस्तानी ताजिरों के साथ वज़ीर ख़ारजा के तौर पर नरसिम्हा राव के मसालहती रिमार्क्स को याद करते हुए कहते हैं कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि पड़ोसी ओहे के दरमियान कुछ देर के लिए बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आखिर में हमसायगी बरकरार रहती है। और बाद में राव ने 15 अगस्त 1994 को पाकिस्तान पर तंज किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म मोदी ने दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया था। कहा, आपके साथ, आपके बगैर, आपके बावजूद कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा रहेगा। इस किताब में 1988 में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और वज़ीर आज़म राजीव गांधी के सफ़ीर रूनन सीन के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में एक अफसोसनाक याद ताज़ा है। शुरू में उन्होंने इशारा दिया था कि मीटिंग रूम में गड़बड़ होने का इम्कान है और हसास मामलात को नोटपैड पर हाथ से लिखे तबादलों के जरिए बताया जाएगा, जबकि रिकॉर्ड के लिए बातचीत बैक वक्त जारी रह सकती है। लांबा ने वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 में लाहौर की बस यात्रा,
2001 में आगरा में चोटी कॉन्फ्रेंस, 2004 में इस्लामाबाद के दौरे और मीनार पाकिस्तान पर उनके इस यकीन को सराहा कि एक मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान हिंदुस्तान के हक में है। मिस्टर लंबा की किताब की मजबूती ये है कि उन्होंने वजीर आज़म मनमोहन सिंह के सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तानी हम मनसबों, ख़ास तौर पर तारिक अजीज़, जनरल मुशर्रफ के मोतमिद के साथ बैक चैनल कोशिशें की। वो 2005-2014 तक 9 साल पर मुहित थे। इस अरसे के दौरान लंबा ने हिसाब लगाया कि वो 68 बार रहनुमाई के लिए सिंह से मिला और हल के लिए इसके पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों से 27 बार मिला। आहिस्ता आहिस्ता वो मुशर्रफ के 4 निकाती मंसूबे और मनमोहन सिंह की नरम सरहदों के जरिए माशी इंजमाम की तजवीज़ के दरमियान नो मैंस लैंड में दाखिल हो गए। एक मुआहिदा गिरफ्त में नमूदार हुआ और फिर एक मेराज की तरह गायब हो गया। पाक भारत अमन नामुमकिन साबित हुआ है क्योंकि दोनों अतराफ की क़यादत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें एक रुकावट है जो हल तलाश करने में रुकावट पैदा करती है कि हिंदुस्तान की तरफ से सियासी और हमारी तरफ फौज। ताहम एक नाकाबिल बयान सवाल बाकी है, जबकि तारीख जानती है कि इन सियासतदानों के साथ किया हुआ जिन्हें फैसले करने चाहिए थे और नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वो नादीदा कुव्वतें कहाँ हैं जिन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका। जनाब लंबा ने इस अफसोस के साथ इख्तिताम किया, बातचीत, राब्ते और वसीतर अमन अमल के इम्कानात कभी इतने दूर नजर नहीं आए क्योंकि हम एक दूसरे को बुनियादी तौर पर मजहब के नुक्ता नजर से देखते हैं। सर्द जंग के दौरान चर्चिल का अमेरिका और सोवियत यूनियन को दिया गया मशवरा हमारे ममालिक की क़यादत की रहनुमाई कर सकता है, दोनों दुनियाओं के दरमियान खलीज को पाटे ताकि हर कोई अपनी जिंदगी गुजार सके, अगर दोस्ती में नहीं तो कम अज कम नफरत के बगैर। मुसन्निफ एक मुसन्निफ है। अखज़ शुदा बतारीख 6 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.